गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए फिर से शुरू हो चुका है प्रगति मैदान से। और आज यहाँ पे लगा है वन हेल्थ वन इंडिया एडवांटेज हेल्थ केयर एग्जीबिशन 2023। देख सकते हैं, अगर आप लोग मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के लोग आ रखे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रखे हैं जो कि पैन इंडिया और ओवरसीज सारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो आगे चलते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंदर जाके बात करते हैं एग्जीबिटर से, देख लेते हैं कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होने वाला है, किस तरीके से आप लोग इनसे डायरेक्टली वीडियो में जुड़ सकते हैं और क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली हैं पूरी हेल्थ सेटअप के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और जो लोग फिर से चैनल पर नए हैं वो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah, hi. Good afternoon, everybody. I am Somnath Shetty. I work for Wokhad Hospital as international business head. Wokhad Hospital basically is an Indian multinational. It's a 55-year-old company, primarily into pharmacy and hospitals. So it has a huge pharmaceutical manufacturing setup. And I mean, it's in hospitals we are about 30-year-old in hospital chain. We have 6 hospitals and we have 2,000 beds capacity. We are largely based in the western part of India, and primarily what we do in terms of hospital is we treat a lot of international as well as domestic patients. So I take care of international business. So we receive patients from about 80 odd countries each year, and in the last 8-9 years we have treated about 45,000 international patients. And what we try to do is we give end-to-end services to our patients who travel to our hospital. And the best part is we have a very robust system at the back end which takes care of coordination of the entire medical journey for the patient when they are there in the hospital. And what we try to do well for the patient. And we have grown in the last 5 years, and last year we have treated about 5,000 patients in our hospital. So we want to keep doing well and keep treating international as well as domestic patients as best as we can. Thank you. So do you have any branch in India? So we have 6 hospitals across western part of India. So we are in Mumbai, we are in Nagpur, we are in Rajkot. So we are based out of 3 different cities and 2 states. हम लोग पूरा जैसे मैंने कहा, हमारे साल में हमारे करीब 4,000 पेशेंट आते हैं, 4 से 5,000, और करीब 80 कंट्रीज से आते हैं हर साल. तो उस महीने में वी कवर अ लॉट ऑफ कंट्रीज. So we cover Africa, we cover US, we cover Middle East, we cover US, Australia, New Zealand से भी आते हैं. ओवरऑल सारी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ऑर्थोपेडिक, स्पाइन, कार्डियक, गायनेक, यूरोलॉजी, ट्रांसप्लांट. So starting with this, you see that the profile of patients whom we treated. So you see a sample of this, and here you see the layout of the OT. One of the OTs in our hospital. As you see the numbers here, we have such 38 operation theaters spread out in 4 cities in 6 hospitals. You see the cath lab. So what I would like to say, it's a very trustworthy organization, and it has been there for the last 30 years treating patients with a lot of heart. So then the more to connect with you, what the email ID process, what the email ID of Yeah, I can share that with you. I can share that with you once we are through this. If you remember, please mention over there. Yeah, it is treatment.wokhadhospitals.com. treatment@wokhadhospitals.com. So which is right. It's a bit lengthy, so I would share it with you. It's treatment@wokhadhospitals.com. So thank you so much. Thank you so much for your time. Have a good day. Thanks. Okay, I am Ravi Dadich, Chief Executive Officer of PMBI, which is Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. And this organization implements Pradhan Mantri Bharatiya Janaushadhi Pariyojana to provide affordable medicines for all Indian citizens through its retail stores, which are more than 9,000 in number. More than 2,000 medicines and medical devices which are part of the product basket, and these medicines covers more than 60 therapeutic groups, like all anti-infective, anti-allergic, anti-diabetic, cardiovascular. So they cover all kind of medicines which are required generally by any patient anywhere. And besides that, there are medical devices of all kinds like injections, sutures,
oximeters, thermometers, these kind of devices are there. Some menstrual products are there, like sanitary napkins at ₹1 only. So all these medicines are priced at 50 to 90% cheaper than the branded products which anybody generally finds in the market. तो कुछ सर ऐसा कुछ देखा जाए तो इशू आता है कोई इसमें कि अगर भाई कोई प्राइवेट से मेडिसिन ले रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ में डिस्काउंटेड है, तो ऐसा कोई तो नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है काइंड ऑफ? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो ये मेडिसिन चीपर जरूर है, सस्ती है, ताकि लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएं, बट इनकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये सभी WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से ही खरीदी जाती हैं और इतनी लार्ज स्केल पे खरीदी जाती हैं, और इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है गवर्नमेंट का, इसलिए दवाइयाँ और इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खर्चा भी नहीं होता है। तो लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट के कारण से और इस उत्तम क्वालिटी को हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। काइंड ऑफ देखा जाए तो इंडिया और दिल्ली में कितनी ब्रांचेस अभी काइंड ऑफ तो इसको ब्रांचेस नहीं, हम रिटेल स्टोर्स बोलते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर या मेडिकल शॉप जैसे बोलते हैं। पूरे देश में 9300 शॉप से ज़्यादा अभी हैं। देश के सभी 36 यानी डिस्ट्रिक्ट, सभी 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज इसमें कवर्ड है, और हर स्टेट कवर्ड है। पूरे देश के किसी भी कोने में आप ये इसको गूगल पे एक जनौषधि सुगम ऐप है, उस पर सर्च कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट जनौषधि केंद्र कौन सा है, और इसी सुगम ऐप के द्वारा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, और उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ब्रांडेड कैटेगरी में इस दवाई की क्या कीमत है और इसमें क्या है। तो ये पूरा देशव्यापी परियोजना है, सभी जगह इसकी प्रेजेंस है। सो काइंड ऑफ सर इसका कोई कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजी लेना चाहे कोई काइंड ऑफ तो ऊपर अपना एरिया में, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज तो अवेलेबल? बहुत सिंपल सिस्टम है। इसके लिए जनौषधि की वेबसाइट पर जाना होगा, और इसमें पूरे देश के अभी 650 जिलों में, जहां पर इसकी संख्या सामान्य से थोड़ी कम है, वहां पर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, और वो प्रक्रिया अभी जारी है। उसमें ऑलरेडी एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं, और वहां पर यदि डी फार्मा या बी फार्मा कोई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए, जो कि ड्रग लाइसेंस की कंडीशन है, तो वो लोग इसका केंद्र खोल सकते हैं, और फिर एक कंप्यूटर सिस्टम से उसको हम दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है पूरे देश में, उसके माध्यम से दवाइयाँ 3 से 4 दिन के अंदर उसको सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। At the last end, do you have any website or contact number if anyone wants to connect with you? यस, janaushadhi.gov.in इसकी वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट करके इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ केंद्र है, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या उसका फायदा है। ये सब जानकारी इस वेबसाइट पर मिल सकती है, या टोल फ्री नंबर है 1800-180-8080, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for the explanation. थैंक यू। Hello, my name is Amit. I am working Deputy General Manager Export in Shivani Scientific. We are a pioneer, innovator and leader in the IVF segment across India as well as the globe. We have set up more than 2000 IVF and IUI labs in India, and more than 140 IVF labs across the globe, include Africa, different part of the countries of the Africa, Middle East, Europe, as well as the Latin American countries. Nowadays, infertility is the challenging subject to address by the clinician as well as the gynecologist, and Shivani Scientific working in that direction to empower the clinician as well as the gynecologist, embryologist to deal with this disease in a much more prompt and efficient way. So I believe that in upcoming time we will collaborate with a much more clinician as well as the gynecologist, big hospitals, corporate institutions to do well in this segment. Yeah, we are manufacturers. We are almost 70% we are doing the manufacturing of the equipments. We are also service provider in terms of the annual maintenance contract, comprehensive maintenance contract. In the same time, we are also offering clinical services to the young embryologist. Last but not least, we are also leader in the education segment. We are having our academy that is called EART Academy, affiliated with the UK, and we are also doing lot of certification course, 1-day course, 10 hours courses, and people from the different part of the world are coming, joining, empowering themselves, to do well in their segment. Now, usually, what hospitals and the other people are recommending or requesting to us, they come with some, space like a layout. We do some feasible studies on that, and we suggest, that you should follow this type of the criteria or parameters to make or build up your lab, because in every different countries they are having a different
compliance standards, different guidelines to prepare the labs. After setting the entire lab with the international standards, we install the different type of the equipments. Those are the equipments which is basically manufactured by the Shivani, but in the same time we are also specialized and importing the equipments from the different part of the world, as well as the exclusive distributor of those companies. We set up the entire equipments in their premises. After setting the premises, the final look will be like this only. These are the ideal standard specialization of the labs, which basically we are promoting to the different hospitals. So this is basically our working structures, and after that, if you will go through, the different type of the pictures, marketing and patient support, staff recruitment trainings, clinical SOP hands holding. And it's not like that we are just going to build up the labs. We are also doing the hands holding for the further clinical empowerment, as well as the upgrading of the equipments in the lab on timely basis. So if anyone wants to connect with you B2B, what the right Okay, he or she can go to the Shivani Scientific website. There is an export division, and there is a export director name and mobile number is mentioned. Our export director is Seetal Modi. They can write on the mail for the further information. In the same time, we are also having our domestic division. Again, there is a name and phone number is mentioned there. They can go, they can search, they can write a mail. Our representative, our people will revert back accordingly. Thank you so much. Thank you. Its honor is mine. Thanks a lot.